Yeah, nice. ये बात क्लियर है ना? यहाँ हो क्या फिर क्या रहा है? There is a circular path. Person A takes 2 minutes to complete the round, and person B takes 3 minutes to complete the round. So the one which is faster, the one who is faster, will catch up with the second one from behind, like this. ये अभी भी सेकंड वाला अभी भी चक्कर काट ही रहा है, बट पहला वाला उसको ओवरटेक कर रहा है बार बार. हाँ मैं समझ गई. Again, final answer देने की कोशिश मत करो. How will you figure it out? The ideas will matter. तो कोई idea दो that this way we can figure out, and then we will try to apply that idea to see what we figure out, and we'll see that whatever we have figured out is correct or not. There would be a way to do that, but idea would matter. How you figure it out. Can you mark their positions on the path? हाँ अब मुझे समझ आया. हम देखो पर्सन ए एक राउंड में 2 मिनट्स लगाता है, तो 2 राउंड्स में 4 मिनट्स. वैसे ही पर्सन बी 1 राउंड में 3 मिनट्स लगाता है और 2 राउंड्स में 6 मिनट्स लगाएगा. तो वैसे ही अगर हम जाते रहे तो आई थिंक एक टाइम होगा जब आई थिंक 24 मिनट्स हो जाएंगे. तो तब शायद से दे विल मीट. इसको थोड़ा विजुअली थोड़ा देख लें जो तुमने बोला. तो 1 राउंड में ये 2 मिनट्स लगा रहा है एंड ये 3 मिनट्स. ये राउंड्स हैं. जब 2 राउंड्स हो जाएंगे तो ए के 4 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे और बी के 6 मिनट्स. इज दैट सो? यस. जब 3 राउंड्स हो जाएंगे तो ए के 6 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे और बी के 9 मिनट्स. इस तरह से चलते जाते हैं. ये बोल रहे हो? हाँ. कहां तक उससे क्या होगा? कहां तक चलना है हमें? क्या होगा? तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नंबर ऑफ राउंड्स, नो, नंबर ऑफ द टाइम, द नंबर ऑफ मिनट्स समवेयर विल कम इक्वल. हाँ. अगर थोड़ा डीपली सोचोगे, थोड़ा और बेटर सोचोगे, ये शायद कभी पॉसिबल ना हो, क्योंकि यहां पर कोई तो राउंड्स आएंगे. मान लो यहां पे आ गए 12 राउंड्स. सपोज 12 राउंड्स दोनों ए और बी सेम टाइम में कभी कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी स्पीड अलग है. कभी भी आमने सामने सेम नंबर नहीं आने वाला है. सेम राउंड नंबर ऑफ राउंड्स के सामने सेम टाइम नहीं आने वाला दोनों का कभी भी. मानते हो? अगर सेम टाइम आ रहा होता सेम राउंड्स के लिए तो ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है, राइट? Good, but the idea matters. You thought of something that this might, but then if you work it out ना, अगर आप इसको वर्क कर रहे होते आपको दिखता कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कभी. So this, क्योंकि दोनों एक साथ कभी भी 12th राउंड नहीं कंप्लीट कर पाएंगे एक साथ, क्योंकि एक पीछे होगा. Absolutely. They will not be in the same time. Correct. एकदम सही बोल रहे हो. तो फिर we need to figure out something else. Can you mark position of A and B after every minute? Position on the path. So for example, चलो एक बार मार्क करते हैं, ठीक है? A का हम पिंक से मार्क कर रहे हैं, तो A अभी यहाँ पर है. This is 0 minute अभी स्टार्ट हो रहा है. After 1 minute A कहाँ पर होगा? On this path. बीच में होगा आई थिंक. एकदम ऑपोजिट यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे मैं A1 लिख देता हूँ. A1 मतलब आफ्टर 1 मिनट A यहाँ पर है, ठीक है? और B का हम ग्रीन से बनाएंगे. B 1 मिनट बाद कहाँ पे होगा? हाँ यहीं पर होगा. Where? जहाँ पर ये एरो है वहाँ पर. अच्छा, हाफ से थोड़ा सा कम, is it? हाँ. Okay. Like quarter. ये हो गया B1. अभी A कहाँ पर होगा सेकंड मिनट में?
A या B? ए एक एक करके चल रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ। सेकंड मिनट में अब ए और बी कहां पर होंगे। सेकेंड मिनट में A तो वापस से जहाँ पे स्टार्ट किया था वहां पर आ जाएगा। करेक्ट है, तो इसको तो A0 लिखते हैं, A2 यहाँ पर है ना। बी कहां पर होगा सेकंड मिनट में? हाँ, दूसरे हाफ से थोड़ा सा कम। यहाँ पर, राइट। हाँ। ए कहां पर होगा थर्ड मिनट में? जहाँ पे पहले था, बीच में। ओके, सो यहाँ पर बी कहां पे होगा थर्ड मिनट में? जहाँ पर B1 है वहीं पे। थर्ड मिनट में B जहाँ पे शुरू किया था वहां पर होगा। ठीक है, ए कहां पर होगा फोर्थ मिनट में? और जहाँ पे शुरू किया था वहां पर होगा। बी कहां पर होगा फोर्थ मिनट में? और जहाँ पर B1 लिखा है वहां पर होगा। फिफ्थ मिनट में ए कहां पर होगा? A3 जहाँ पर है वहां पर होगा। बी कहां पर होगा फिफ्थ मिनट में? अब जहाँ पर B2 लिखा है वहां पे। ए कहां पे होगा सिक्स्थ मिनट में? जहाँ पर शुरू किया था। बी कहां पर होगा सिक्स्थ मिनट में? जहाँ पे शुरू किया था, नहीं। हाँ, A5 के B5 के बाद था। ये देखो, ये दोनों सेम टाइम में आ गए ना यहाँ पर। This is that point. They will be here together. So in the sixth, at the end of the sixth minute, isn't it? Actually, sorry. Yeah, at the end of the sixth minute, correct. See how simple it was. Now A will overtake. अभी A overtake कर लेगा उसको, B को. Then the cycle will start to repeat. What is the next minute when they will meet again? I think 12 after another 6 minutes. Yeah, because now if they're meeting at that point, both of them, it's like starting the race again. It's the same circle, it's the same pattern which will start to repeat, right? Right, Anisha? Yes. Yeah. Okay. Do you think the same logic can be applied in the second scenario? This one, when Yes. A completes one round in 4 minutes, B in 5 minutes. How do you think? When do you think they will meet? While running, they will meet. ये 4 और 5 minutes में. Yes. If you figure it out this way only, when do you think? I think around 20. But how? How do you know? How do you figure it out? Just a guess. Okay. Why? Why a guess? Be sure. What's wrong with that? See, I'll tell you. So you analyze the first one, जो पहले हमने अभी किया. You analyze it better. Better analyze करोगे, तो तुम्हें कुछ मिल सकता है. Something which is applicable directly everywhere. For example, मैं दिखाता हूँ तुम्हें. ये A है ना? A completes one round in 2 minutes. In 2 minutes. मिल गया था, तुमने ध्यान नहीं दिया. यहाँ पे मिला था. Round 3 में and round 2 में. Round 2. It was round 2. Second minute, I guess. No, I think it's round 2. Round 2 में round 3 में A is taking 6 minutes. Round 3 कर लेता है. हाँ, तो सही है ना? 6 minutes बाद 2 minutes. They will be in the starting position after 6 minutes. Or you can do it like this. A takes
2 minutes for one round, right? So he would have covered one round, again one round, right? In 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, one round. He would have covered one round in 2 minutes, so 3 and 3. So after 6 minutes, they will meet. After 6 minutes, they will be at the starting position. Or A overtaking B in the 6th minute. Yeah. हाँ ठीक है, एक सेकंड। Do you think you can apply the same logic here as well in the Now I think 20 हो सकता है. Imagine it. Think about it. Make it. Make it. If that is what it takes. So this is A, this is B. A would have covered A, B. There is a lot of background noise. Aisha. हाँ एक सेकंड. You can mute. It's okay. No, don't say anything. You can mute. It's fine. So you can unmute and then speak. It's okay. So A B है. ये 4 minutes लेता है, ये 5 minutes लेता है for the complete round. Correct? You figure it out. You tell me. Figure out करो थोड़ा सा. ये logic अभी तुमने discuss किया ही है. So you have an idea now how to figure it out. It's your idea. ये 4 minutes में half of the circle तक पहुंच जाएगा. 4 minutes में 4 minutes में full round cover कर लेगा. और B 5 rounds cover कर लेता है. तो A 2 minutes में आधा सर्कल कवर कर लेगा और B 2 minutes में 2 minutes लेने में आपको दिक्कत होगी क्योंकि 5 में 5 का half 2 नहीं होता, 2.5 होता है. 2 में दिक्कत हो जाएगी. You will be, why don't you take 1 minute? Why go for 2? If you take 1 minute, you will see that it fits properly. Yes. आप म्यूट पे हो बेटा. 1 minute में A quarter of the circle, around quarter circle complete कर लेगा. Then और B फिर 1 minute में around 1/5 cover कर लेगा. I'll just mark it थोड़ा अंदाजे से, ठीक है? So this will be B1, B2, B3, B4, and then B5. Yeah, 1/5. Yep. Anisha? So, Anisha, do you think you can figure this out, the below one, on the basis of how you figured out the first one? Please do. Mute पे हो. हाँ मैं एक बार सोच रही कैसे कर सकते हैं. मार्क कर दे सारी. अगर हम सारे प्लेसेस को मार्क कर दे तो
So I think they will meet. इसमें मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जो टॉप वाला फिगर है, ऊपर वाला फिगर है, उसमें एक चीज ध्यान से देखो, मैं तुम्हें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। आई थिंक आई फॉरगॉट टू पॉइंट आउट बिफोर। जैसे तुम्हें समझ में आ रहा है ना इस डिजिट का क्या मतलब है? जैसे 5 लिखा है, इसका मतलब है वेयर इज ए एट द एंड ऑफ 5th मिनट। उस मिनट की वो कहां पर है? तो देखो, जब A5 यहां पर था, ठीक है, तो B5 यहां पर है। डू यू सी दैट? B15 yes, यहां पर है। ये इसलिए है क्योंकि A पीछे से कर रहा है, राइट? लेकिन अच्छा, B3 पे चलते हैं। जब B3 यहां है तो A3 यहां पर है। जब A यहां पर आ गया तो B यहां जा चुका है ना? फिर A4 के बाद क्या है? A5। जब A फिर यहां पर आ गया तो B यहां पे जा चुका है। A5 will never be able to, will catch up, right? Somewhere it will catch up with B. इसी तरह से तुम नीचे वाले में भी ऑब्जर्व कर सकते हो, where they will catch up. और what you can do is, तुम ये बता सकते हो, जैसे यहाँ पे बताया था ना कि A 1 मिनट में 2 राउंड्स कर चुका है, 2 राउंड्स कर चुका है, सॉरी 1 राउंड कर चुका है, 1 राउंड कर चुका है 2 मिनट्स में, फिर 1 राउंड 2 मिनट्स में, फिर 1 राउंड 2 मिनट्स में। B 1 राउंड 3 में, एक और राउंड 3 मिनट्स में। You can always check when their times are becoming equal. In how many rounds? Each will have different set of rounds. In what set of different rounds they will have the same timing? Because at that time they are meeting at the starting position for sure. You can think like that. Okay. एक सेकंड। Yep. ये देखा। क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। वो 20 पे मीट कर रहे हैं। 20 मिनट्स पे कैसे? How did you figure it out? मैंने अभी वही वाली ये जो भी आपने कहा है ना, वही अभी मैंने 4 और 5 से करा। So मीटिंग एट 20। तो 4 मिनट्स में 1 राउंड, 4 मिनट्स में 1 राउंड, 4 मिनट्स में 1 राउंड, like that. 5 minutes में 1 round, 5 minutes में 1 round, like that. You will see that, Anisha. हाँ ऐसे। Yep, got it. समझ गया, brilliant. So you can figure it out that when 4 repeated 5 times means 5 rounds. You know, 4 minutes plus 4 minutes. ऐसा करके it has to be repeated 5 times. And then for the B, 5 minutes plus 5 minutes, it has to be repeated 4 times. And they will come at the same time, which is 20 minutes. They will meet at the starting point in 20 minutes, for sure, right? Yes. Is that okay? मैंने भी एक चीज नोटिस करी कि ये 2 और 3, 2 into 3 6 होता है और 6 minutes पर ही मीट हुए। वैसे ही 4 और 5 हाँ 20 होता है और अभी 20 minutes पर ही मीट हुआ है। Do you think that's a coincidence? Is it? I think it's a coincidence. Think about it. Is it a coincidence? Maybe. क्योंकि अगर हम कोई big numbers choose करें तब शायद से ऐसा नहीं हो। Then let's choose them. Let's choose big numbers. See, okay, there is no coincidence in logic. Yeah.
कोइंसिडेंस होता है जिसको तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो. It just happened. That's all. You cannot put a reasoning to it. It just happened. 2, 3, 6, and 4, 5, 20. They did not just happen. You figured out the logic, and that's why they are that. So let's take up big number. Let's take that up, as you said. How big do you want it to be? I don't know. Like 9 and 10 वैसा कुछ. वैसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है. So you just whatever convinces you, you take it and test it. काफी simple बात है ये. आप ले लो. Now this is the path again, and ये रहा A and B. So A 9 minutes for one round, and B 10 minutes for one round. चलेगा? हाँ. Great. So look for yourself. The same thing which we did. You figure it out. A will take 10 rounds. A will take 10 rounds to reach somewhere in time. Time के respect में, in the same minute. Where B will reach in 9 rounds. Think. Okay. And Yeah. meet हो रहा है. कब मीट हो रहा है? 90 में 90 minutes. How are you so sure? Huh? How are you so sure? I think 90 पर ही meet हो रहा है. Do you think that they will meet at the end of the 90 minutes, and that would be the starting position over here only? Yes, maybe. Maybe. I thought you were sure about it. The way you were saying, now you're saying maybe. Why? So you need to be sure, and you will figure out a way to be sure about it. I want you to develop this habit. I want you to develop this habit to figure out things for yourself and conclude them in a way that it becomes reusable. उसको इस तरह से conclude करो कि उसको reuse कर सको. Some pattern, some logic which is concrete, कि यही होता है हमेशा. I have seen this, I have understood it. You figure it out that way, will you? Yes. Yeah, okay. So then moving on to the next picture of this. There was this another picture, right? This one. हाँ. ये वाला बहुत easy है. Okay. इसमें हमें basically क्या करना है? हमें इसमें just a second. So हमारे पास एक कप है. उस कप का कुछ कैपेसिटी है, बट हमें पता नहीं है. हमें फाइंड करना है कि कितनी सारी उसकी whatever possible capacities this mug can have. कर क्या रहे हैं? मग इस ओशन में से पानी लेता है और इनमें पोर करता है. It pours it into one after the another, one by one, fills them up. इस बीकर का साइज है 72 लीटर and इसका 120 लीटर. Only condition is that your mug should not be empty. Sorry, not empty. आधा या it shouldn't be full. It shouldn't have water less than the full limit. हमेशा पूरा भरा हुआ होना चाहिए जब आप इसको pour कर रहे हो. In either of the beakers, and you have to completely fill the beakers. So how many possible capacities this mug can have? What all possible capacities? Yeah. हाँ, इसमें
1 लीटर अगर कप हो तो हो जाएगा 1 liter cup हो, ठीक है। तो 1 liter के केस में how many times it has to pour in this and how many times it has to pour in this? in the first beaker, the 72 liters one, 72 times. Then in the second one, 120 times. Okay, then go on. 2 liters. The first one it's 36 times. In the second one it's 60 times. Then is 3 liters. 3 liters, it would be this one, around 24 times, I guess. yeah, it will be 24 times. And in the right one? In the right one, it would be 40 times. around, yeah. Then further? How many I could only capacities did you figure out? How many possible capacities? So How are you figuring it out? आपका process क्या है? Method क्या है? कैसे कर रहे हो figure out? बोलो मुझे. What is the logic behind your thinking? I am finding out that if it's divisible by 70, any number that is divisible by 72 and 120. उल्टा तो नहीं बोल रहे हो? Any number which can divide 72 and 120. जैसे आप जब 3 से ट्राई करते हो तो 3 से आप 3 is divisible by 72 और 72 is divisible by 3. 72 is divisible by 3. I know that you mean the right thing, but आप उल्टा बोल रहे थे. You are like any number which is divisible by both of them. No, any number which can divide both of them into parts. 3 72 को 3 parts में break करता है. 24 24 24. 3 120 को 3 parts में break करता है. 40 40 40. That way. ठीक है. So what other numbers are there which can break these two completely, properly, completely into parts? What other numbers are there? So whatever those numbers will be there, all those numbers can be the possible capacity of this mug. Yes. It's just a matter of time that you figure out all those numbers. Right? Yeah, there is 6 also. Right. In the first one, 6 would be 12, I guess. Yeah, 12. 20 No, not 12. Why? It is 12. It is. Oh. And then in the second one, it would be 6, right? So it would be 20 times. 20. Yeah, 20. If the mug is of 6 liter capacity, it has to be poured 20 times into the beaker 2 to fill it up, to fill the whole capacity, whole volume of 120 liters. Beaker 2. Yeah. In beaker 1, Yes. it will be 12 times the mug has to, if the mug is of 6 liter capacity. Do you think you can find out what is the maximum capacity that mug can have? No, because numbers never end. And I think No, think before you say so. Think about it. we can. Can it be 1,000 liter? The mug capacity No. it will never fit. Yeah, so there is a maximum. It would be. Yeah, it would be below 120 only. Absolutely. Don't you think it would be below 72 also? Yeah, below 72.
Yeah, you will have to figure it out. You will go ahead, you will find all the possibilities, and while finding all the possibilities, you will reach a limit. That will be the maximum capacity of the mug. You I will. think the maximum. अब तुम्हें क्या करना है? I'll tell you what you need to do. So this is going to be your work. Figure out करो ये चीज, ठीक है? You figure this out, and also the general logic for this. Figure out the logic, why it is happening, how it is happening, and you give me a confident answer, confident explanation in the next session. That this is why and this is how. Okay. Yeah, and then I'm going to share with you more applicative problems where you would be able to apply your own logic just like this one in this context only, and you'll probably end up figure out better and more things in a better way, better logic. Yeah? Yeah. Fine? Okay, then I'll see you later. Okay. Bye-bye. Bye. Bye.